Today our topic is conclusions from the study of deutron problem. As we have already discussed that to find out the nature of nuclear force, we can study a bound system of two nuclei, which is the simplest form of a nucleus which we can find in nature. And the example of two nucleon system is deuteron. And other is to study the nucleon-nucleon scattering. In nucleon-nucleon scattering, we can study the neutron-proton scattering. We can also study proton-proton scattering. Then we can also study neutron-neutron scattering. But in this topic, our focus will be on the conclusions which we derived from the study of deuteron problem. In deuteron problem, what we have done, that first we notify the physical some of the experimentally derived values of the some of the physical properties of the deuteron. Then we write a Schrodinger equation for the deuteron and then solve this Schrodinger equation by considering a potential valve. Then using boundary conditions, we solve this Schrodinger equation and determine some of the values. Then by comparing these values with the experimental values of some of the properties of the deuteron, we derived some conclusions regarding the nature of nuclear force. I want to summarize those properties of the nuclear force which we derived from the study of deuteron problem. The study of deuteron problem, although limited in as much as deuteron possesses only the ground state and no excited state exists for the bound NP system, gives invaluable clues about the nature of nuclear force. हम जानते हैं कि जो स्टडी हमने पिछले टॉपिक में की है वो ड्यूट्रॉन के ग्राउंड स्टेट के बारे में थी और इसलिए जो भी कंक्लूजन्स हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में निकालते हैं वो सिर्फ हमें ग्राउंड स्टेट ड्यूट्रॉन के ग्राउंड स्टेट से मिलती है और चूँकि ड्यूट्रॉन की कोई एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए ड्यूट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट से हम न्यूक्लियर फोर्स के नेचर के बारे में कुछ भी कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते. We have also learned that neutron and proton can form a stable combination, that is deuteron, only in triplet state. And that's why in the past study of the deuteron problem, we consider that deuteron lies in triplet state. So whatever conclusions we derived from the triplet state. Since singlet state is basically an unbound state, हमें सिर्फ लगभग 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए. ड्यूट्रॉन अगर सिंगलेट स्टेट में लाई करता है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसी भी सिंगलेट स्टेट में लाई करते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए और इसलिए बेसिकली वो स्टेट अनबाउंड होती है और इस वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करती. तो जो भी स्टडी हमारी है वो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ड्यूट्रॉन से वो सिर्फ ट्रिपलेट स्टेट से ड्राइव की गई है. सिंगलेट स्टेट से हम कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते. सो द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ ड्यूट्रॉन इज लिमिटेड स्टेट. एक और लिमिटेशन जो ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम में हमने डिस्कस की थी वो ये है कि ड्यूट्रॉन इज़ ए लूजली बाउंड सिस्टम. वी डिस्कस दैट द डिस्टेंस बिटवीन अ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन goes beyond the width of the potential valve. Means
In deuteron, we find neutron and proton at a much larger distance than the range of the nuclear force. So we can say that there is a limitation on the information which we get about the neutron proton force from the deuteron. And what is that? Since deuteron is a loosely bound, it tells us about the nuclear force only at rather a large distance of several Fermis. So, in conclusion, two important information we derived from the study of ground state of deuteron. One is that nuclear force is a short range force, and second is a nuclear force is a spin dependent force. Spin dependence means since the nuclear force depends on whether the spins of neutron and proton are parallel or anti-parallel. Thank you.